मोरी अर्ज सुनो अब कन्हाई, मोरी अर्ज सुनो अब कन्हाई, सब तज के तुम्हारे शरण आई, सब तज के तुम्हारे शरण आई, मोरी अर्ज सुनो अब कन्हाई, मोरी अर्ज सुनो अब कन्हाई। दर्शन को मैं आई तियारे द्वार, 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 नौ दुलार जग के रखवार, नौ दुलार जग के रखवा, बनवारी है मुरारी गिरधारी, मैं तो प्रेम भक्ति संग लाई आज, मैं तो प्रेम भक्ति संग लाई आज, मोरी अर्ज सुनो अब कन्हाई आज, मोरी अर्ज सुनो अब कन्हाई। गाने गाने। You just heard Shri Pritam Bhattacharjee, a rising star in the Hindustani music tradition, singing his own composition in Ahir Bhairav. Shri Pritam ji had his initial training starting at age 3 from his mother Srimati Manjushri Bhattacharjee, and then under Shri Amarendra Chakravarti of Kirana Gharana. Since 1995, he has been learning under the Mewati legend Pandit Jasraj. Only 31 years old, Pritam ji has already won numerous awards, performed all over the world, and composed over 200 compositions. Pritam ji now lives in Atlanta, where he performs and teaches regularly. We had the good fortune and privilege to speak to him during his recent trip to the tri-state area for a workshop. Thank you for speaking with us. Thank you, Jayashri ji. Tell us a little bit about yourself. You come from a musical family. Actually, my mom sings, but my father doesn't sing, but he's very much very fond of music and very appreciator of music. He is, and he was very much into music, but he was not a musician, but my mom sings, and the music came from my mom. So I learned also from my mom initially. So, and as you know, my brother also, he's a tabla player, and he is a disciple of Ustad Allah Rakhan Khan Sahab and Ustad Zakir Hussain. And your brother's name is? Is Pritam Bhattacharjee. So he's my elder brother. So हमारे पहले तो म्यूजिक ऐसे ट्रेडिशन में हमारे घर में नहीं था, बट मेरे मॉम जैसे गाती है, मम्मी गाती है, और उससे हम लोगों को आया, तो अभी शायद ऐसे ही आशा करते हैं हमारे अगले पीढ़ी में गाना चलेगा. सो देखते हैं. Okay. So I heard that there is a story on how you met Pandit Jasraj. Yeah, there is an interesting story behind that. In year 1995, he went to Silchar, which is my birthplace. He went to give the concert there, and he sang for 2 days. He performed there for 2 days. So after 1 day concert, I went to meet him the next day, and that time I was 13 years old. 13 years old, yeah. and yeah. you knew him. Yeah. You had heard, and you were a big fan of his. Yeah. Since my childhood, at the age of 7, I started listening to his music, and I was very great fan of his music. So I always wanted to learn from him.
So when in 1995 we went to Silchar and I went to meet him, then I told him that मैं आपके म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका गाना सुन के आई जस्ट गॉट इनिशिएटेड इनटू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. सो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा आके सामने उनको ये बोल रहा है, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो बेटा तुम गाते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ गाता हूँ. तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ गा के सुनाओ. तो मैंने कहा आपके कैसेट का पुरिया गा के सुनाऊं? तो मैंने बोला हाँ गाओ. सो मैंने बस उसका एक पुरिया का एक छपताल बंदिश है, अब थारे बिना कोणा मुरी राखे लाज, अब थारे बिना कोणा मुरी राखे लाज, ये किया था मैंने. सो कोणा मुरी, और बस वो खड़े हो गए. सो वो उनकी गाई हुई है, गाया हुआ रिकॉर्ड में ही है, अब थार बिना कोणा मुरी राखे ला. सो दैट गमक, वो गमक शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरे गले से, क्योंकि बहुत छोटा मैं ये कर पाऊंगा. सो वो जब मैंने गाया 2-4 लाइनें गाए, तो उन्होंने तभी बोला, वो बहुत खुश हो गए सुन के. तो सुन के बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा कोई है यहाँ पे, मैं तुमको लेके जाना चाहता हूँ सिखाने के लिए. So that time my mom was with me, so I introduced her to him, and then later on my father also met him, and then after 2-3 months I went to Bombay, and that's how it started. Yeah. Wow. So बस 95 से जो गाड़ी चलती गई अभी भी चल रही है. सीखने का तो कोई एंड नहीं है, वो सीखने का प्रोसेस अभी भी जारी है. It is remarkable that at such a young age you have composed so many compositions. So my question to you is, what inspires you to compose? यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि inspiration behind my compositions is my गुरुजी, because मैं बचपन से मेरे गुरुजी के साथ जब रहता आया हूँ, हमेशा मैंने देखा कि वो कोई भी थोड़े थोड़े दिन में या कभी भी वो बैठ के कुछ बंदिश बनाते थे, और कुछ भी बंदिश आता था तो वो देखा मैंने अपने गुरुजी को कि वो भी बहुत बंदिश लिखते हैं, बंदिश बनाते हैं, बंदिश गाते हैं. इनफैक्ट कभी कभी ऑन द स्टेज मीन्स वहाँ पे ही बना के उन्होंने बंदिश गाया है. सो दैट फैक्ट used to fascinate me. मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे वो करते हैं, मीन्स ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू ऐसे ही कैसे बंदिश करते हैं, बंदिश बनाते हैं. और हमेशा वो लोग वो जब कुछ भी बंदिश गाते थे, जो ट्रेडिशनल बंदिश है या उनकी खुद की कंपोजिशन है, हमेशा उसका मीनिंग बताते थे, साहित्य बताते थे. सो जितना मैं बड़ा होता गया उतना मुझे उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि बंदिश बनाना या बंदिश को रचना करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है. सो तभी से लेके मैं उसमें इंटरेस्ट लेता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बोल सकते गुरु कृपा. सो बंदिश बनते रहे. I don't think many of our listeners know that Pandit Jasraj composes so much. Yes, he has composed maybe more than 300 bandishes. Wow. Okay. और उनका एक तो जीवी जीवाई करके एक उनका सीरीज ऑफ सीडीज निकला था उनके बंदिश के नोटेशन के साथ, और उनके खुद के बंदिश के साथ 50 बंदिशेस उसमें है, विथ नोटेशंस एंड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ हिज ओन बंदिशेस. Oh wow, I didn't know that. या गोल्डन वॉइस गोल्डन ईयर्स करके इसका नाम है, एल्बम का नाम है, जीवी जीवाई करके जिसको जाना जाता है. सो इट्स अवेलेबल नाउ आल्सो. Okay. Do you know who released it by any chance? Music Today. Music Today. Yeah. Okay. Yeah. So, when you compose, do you start with the words or the notes? Or no, it just comes together. It just comes together. You can't try to make any bandish. It just happens. It just आप कह सकते हैं ये भगवान का गिफ्ट है जो आपके थ्रू शायद वो निकलता है. That's true. You can't try to make bandish, means you can't sit for riyaz and means you can't deliberately make a bandish. It just happens.
maybe one day I was singing Lalit. I was practicing Lalit. I was doing riyaz in Lalit. So that time I was I got that I got that gift from maybe God with that bandish. So मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने ये बनाया है. So it's His will that it happened to that way. It came to me. And in the compositions that you have made, is it all devotional or is it a wide variety? And there are different kinds of bandish I have wrote and composed. Some are Shringar based, means romantic. Some are devotional, but maximum of those devotional means some of those Shringar category romantic bandishes are also some way devotional. That's true. Bhakti Shringar, right? Right. So Krishna and Radha. Right. So maximum of those bandishes are related to Radha Krishna divine love. So it's in a way romantic, in a way bhakti, devotional. Right. Well, particularly I wanted to ask you about one composition that you have done in the Ragmala in Ektal. That's on your CD that you released called Spandan. It has 18 ragas. And so that must be pretty hard to do. That was a challenging job, because in that poetry I had to use some thoughts. Means it was Ragmala, but the lyrics goes like Ye man hariso lage ab. So Yeman stands for Yaman. मन देश में, नेक्स्ट लाइन, मन देश में देखूं जब श्याम रंग भयो है सब. सो मन देश में देखूं जब श्याम रंग भयो है सब. These two lines stands as राग देश. श्री हरि दरस मिलेगी कब, the fourth line, this Shri. So that way I had to make that poetry. Means again it came to me. So I didn't try for that, but it was not that easy job to match all the names with the rag, and it should come to the context of the poetry. Right. And it goes smoothly from one to the other. It is not very abrupt. So that's a skill both in composition and performance. So